Hello everyone, I am Dr. Rachita Manjal working as consultant at Birla Fertility and IVF. After completing my MD in obstetrics and gynecology, I got my training in infertility, IVF and ART from Chennai, Germany and UK. So before we start today's topic about male infertility, its causes and treatment, let me introduce you to Birla Fertility and IVF. At Birla Fertility and IVF, we strive hard to provide compassionate and clinically reliable care at very attractive prices. We have an experience of 21,000 IVF cycles and we specialize in making tailor-made protocols to give maximum success rates to all the infertile couples coming to us. Let's discuss now today's topic, male infertility, its causes and treatment. According to WHO, what is infertility? Infertility is defined as unable to achieve pregnancy after 12 months or more of regular unprotected intercourse. और अगर हम डिवीजन की बात करें अबाउट मेल इनफर्टिलिटी फीमेल इनफर्टिलिटी यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इनफर्टिलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू फीमेल, 1/3 मेल इनफर्टिलिटी का कारण होता है और 1/3 इज आइदर बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी और समटाइम्स इट इज़ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. अभी अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो क्या कारण होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के. मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है अगर हमारा मेल का स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा या फिर स्पर्म के अंदर स्पर्म शेप स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है, मोटिलिटी कम है या फिर देयर इज सम ब्लॉकेज इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम या कोई ट्यूब में ऐसा ब्लॉकेज है विच प्रिवेंट्स द इजेक्शन ऑफ सीमेन. बहुत सारे मेल इनफर्टिलिटी केसेस में वी कैन नॉट एक्चुअली फाइंड द रियल कॉज, बट मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि लॉट ऑफ फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन मेल इनफर्टिलिटी. लाइक फैक्टर्स कैन बी इन्वायरमेंटल, जेनेटिक, chronic health issues, lifestyle factors which can cause male infertility. अगर हम बात करें about the male reproductive system की तो infertility हो सकती है either there is abnormality in the sperm production like there is varicocele in the testes या फिर there is a history of some chemotherapeutic drugs which the male has taken, तो स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकती है. देन सेकेंड कम्स द हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोन प्रोडक्शन एबनॉर्मल होना फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और टेस्टिस. ऑल दिस कैन लीड टू एबनॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन एंड मेल इनफर्टिलिटी. थर्डली देयर कैन बी ऑब्स्ट्रक्शन इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जिससे सीमेन इजैकुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव इनफर्टिलिटी. Then fourthly, there can be abnormality in the semen sperm motility or sperm structure because of some environmental or lifestyle factors. All these are related to male infertility. Now coming to environmental causes of male infertility. बहुत सारे environmental factors हैं या lifestyle factors हैं which can really affect male infertility. If we talk about some like excessive heat around the testicles region can really cause infertility. Like example, if the male partner uses frequently hot tub baths or because of tight clothing, excessive heat around the testicles can cause abnormal sperm production. Secondly, use of drugs like anabolic steroids, alcohol and all misuse of drug can really cause male infertility. Thirdly, smoking has a very oxidative damage to the sperm and can affect sperm structure, motility and sperm counts as well. Then nowadays very commonly it's been found that people are under stress, couples are under stress and stress again cause effect on the sperm production and motility as well. If we talk about the lifestyle factors, obesity, excessive weight of the man can also cause abnormalities in the sperm production. I hope you like this video and this information in this video was helpful to you. If you have any queries, any doubts, without any hesitation, please do contact us. And if you are facing any infertility issue, any male infertility related issue, please visit our website or contact us at Birla Fertility and IVF. Thank you.